Then there are three cases that they had told. No, what are three cases? What are the possibilities of three cases? R1 upon R2 is equals to L1 upon L2 square, or R proportional L square. Second, R1 upon R2 is A2 upon A1 square, or R proportional A raised to minus 2 because it is inverse, or R1 upon R2 is R2 by R1 raised to 4, or R raised to small r raised to minus 4. Please write this much. Written? Yes, sir. Last class I did till some number 8 log wala na. Yes, sir. It. Now ninth one. A copper wire of length 50 centimeter has area of cross section means A 10 raised to minus 6 meter square, carries a current of 0.5 ampere. If the resistivity of wire denoted by rho is 1.8 into 10 raised to minus 8 ohm meter, find electric field across the wire. Very, very, very important. Electric field across the wire. I'm just showing you something here. Current density is denoted by J. It is called current per unit area. Now this few things I'm just writing so that you can remember. Rho is 1 upon sigma. What is rho? Specific resistance, and sigma 1 upon sigma is called as what? Conductivity. Correct? Yes, sir. Electric field is voltage upon length. This is new for you. In electrostatic we have proved. What is electric field? Voltage upon length. We want E. Do you know what is V ka formula in this chapter, current electricity? What is V? IR. IR. Very good, IR. And what is R? Rho L by A na? Yes. Yes, sir. Rho L by A. Divide by L, LL cancel हो जाएगा. Now, what is I given? 0.5. I is 0.5. Yes, sir. Rho is 1.8 into 10 raised to minus 8. Area 10 raised to minus 6. 0.5 into 1.8 is 0.9 into 10 raised to minus 2. Not followed? 0.5 I took in my mind as half. Half into 1.8 is 0.9 minus 8, and this plus 6 will become minus 2. So this you can write 9 into 10 raised to minus 3. Just check, option is there. 9 into 10 raised to minus 3. It's there anywhere. 9 into 10 raised to minus 3. Yes, Anay?
Option A, sir. Option A, correct. This is same as 0.009 volt per meter. Please copy. The half part of this chapter is in 12. Rishabh? Yes, completed. It's Okay. Next is 10th sum, which we have done also in chapter called measurement. If potential V, 10th one, if potential V is 100 plus or minus 0.5 volt and current is 10 plus or minus 0.2 ampere, then what value of resistance is correct? See, whenever this way it is given, then this is V and this is called dV. dV matlab relative error in V. This is I and this is called Di. Hello? So first step you will get R by actual formula V upon I. How much is V? 100. I is 10. So it is 10. But that plus or minus is nothing but dr, na? Hello? Hello? Yes, sir. The R is V upon I. V is 100. I is 10. So I got R. 100 upon 10 is 10. Now I have to find dr. To get dr, you have to think of percentage. So just remember, R is V upon I. That means percentage error in R is percentage error in V. Divide है क्या, multiply error को हमेशा add करना आप, plus percentage error in I. This we have done in first chapter. Yes, sir. So can I say this is our formula, dr upon R into 100? Ratan, Hitaj? Yes, sir. And this is dV upon V into 100 Yes, plus di upon sir. I into 100. Throughout 100, Yes. 100, 100 I can cancel, no? Yes, sir. I want dr. R is given 10. dV is 0.5. V is 100. Di is 0.2. I is 10. Now, this is dr equals to multiply throughout by 10. So 10 into 0.5 upon 100 plus 10 into 0.2 upon 10. I multiplied throughout by 10. So 10, 10 cancel इसका. ये एक 0 cancel. इसका भी एक 0 cancel. So you will get this as dr equals to. What is 0.5 upon 10? Is it 0.05? Yes, sir. Correct. Plus what is 0.2? ये cancel हो गया 10 10 खाली 0.2. So when you add, you will get 0.25 or not, correct? No. Yes, sir. So what is the value?
वैल्यू शुड बी 10 प्लस और माइनस 0.25 है क्या? देखो है ये आंसर ऑप्शन में? No, sir. None of this. Then none of this is our answer. Yes, none of these. Perfect. Everybody has followed this sum? Yes, sir. Yes, sir. Okay. See, any doubt, please ask immediately. Every lecture I am telling physics is not difficult if your doubts are cleared, and toughest if doubts are not clear. And doubt may not be same for every student. If you complete, please help me by saying we have done. Done, sir. Okay. Some homework I had given, I think. Any homework I had given? No, sir. What was the homework, Avan? No, sir. Nothing. Nothing. No homework was given. No, sir. No, sir. If you remember, see, I had told law of It's motion. We can't 75. practice. Sir, yes, sir. Dynamite is 75. Sir, Kinematics. kinematics you told. So how many you did? 75. So please try to complete further 25 till next lecture. Yes, sir. Next. See, every topic you have to do 3 times. So एकदम perfect हो जाता है. 11th. The example of non-ohmic. ये सेम किया ना मैंने टेक्स्ट बुक का non-ohmic वाला. कॉपर वायर है ना, तो ओमिक है क्या नॉन ओमिक है? कॉपर वायर Ohmic. ओमिक है, बराबर. वायर इज अ ओमिक, यस. देन व्हाट अबाउट कार्बन रेजिस्टर? ये भी ओमिक. Ohmic. वेरी गुड, ये भी ओमिक है. व्हाट अबाउट डायोड? Non-ohmic. Non-ohmic. नॉन ओमिक. एंड व्हाट अबाउट दिस टंगस्टन वायर? वायर है तो ओमिक है, याद रखना. Ohmic, yes, sir. और लिक्विड वाला होगा तो नॉन ओमिक. वैसा ये डायोड को सेमीकंडक्टर बोला था, नॉन ओमिक. प्लीज राइट डाउन ऑल द आंसर. Done, sir. Sum number 12. In the figure, a carbon resistor has band of different color on its body as mentioned. These are the color: white, brown, red,
silver. We know B, P, Roy of Great Britain had very good wife. White means which digit? 9. Yes, sir. And Yes, brown sir. means, 9. and brown, 1. One. 1. One. red. 2. 2. So what Two. will be value of resistance? 12 into 10 raised to 9 plus or minus 10%. Yes, sir. है क्या? हाँ. सॉरी 10 raised to 9 नहीं 10 raised to 2. क्या कर दिया मैंने? 92 into 10 raised to 2 ना? 91. 91. 91. So this is same as 9.1 into 10 raised to 3 ohm Yes, plus or sir. minus 10%. So can I say 9.1 kilo ohm? Yes, sir. That means D is the answer Yes, sir. because that is the closest one. Right. Done, sir. 13. If piece of copper and germanium are heated, matlab temperature is increased to 75, then what will happen to the resistance? Is this copper a metal? Yes, sir. Yes, sir. So resistance will increase na copper ka. Yes. 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 This is semiconductor, no? Germanium and silicon, they are called sir. semiconductor. See, germanium or silicon, they are called semiconductor. Here when temperature is increased, then ulta will happen. Resistance will decrease. Check, we have this option. The resistance of copper will increase and that of germanium will decrease. That is C option. Yes, sir. Yeah, right, properly. Yes, Aryan Bagwe. Aryan, Sandesh, Yes, sir. कुछ डाउट तो नहीं है ना? मोहित, स्वराज, राजवर्धन. Yeah, please No, ask. sir. Yes. No, sir. Done, sir. Okay. Next, 14th, again very important sum. Temperature coefficient of resistance, मतलब alpha ना? 0.00125 degrees Celsius raised to -1. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. What will be the resistance at 2 ohm? Sorry. What will be the resistance of wire will be 2 ohm at what temperature? What temperature? At what? Avan, can you see clearly? Yes, sir. What is different in the unit? This is in Celsius, na?
Yes, sir. And it's but this in is in Kelvin. yes, sir. Are they same? No. So first I should convert this into degree Celsius. 300 Kelvin minus 273 no in degree Celsius. Yes, sir. मालूम है ना बराबर ये? हाँ Right. Degree Celsius to Kelvin we add. T Kelvin plus 273 we add. But उल्टा रहेगा तो we'll subtract है ना? Hello? Yes, sir. So this is 27 degrees Celsius. This is the only importance in this sum. If we keep this in Kelvin, you will get wrong result. Because alpha is in Celsius, temperature should be in Celsius. You know conversion factor, how to convert Kelvin to Celsius? Everybody is knowing? Yes, sir. Okay. Tell me formula for temperature dependence wala. RT is R0 R0 1 1 plus plus alpha delta alpha T. delta T. Delta T मतलब temperature ही होएगा वो. RT means R1 equal to R0 1 plus alpha into delta T is 27 or not? Correct? yes sir. Very good. RT is R0 into 1 plus alpha, T2 I have to find. Please copy this much. Anay? Anay Pradhan, you are in the range? Yes, sir. Okay. We are interested in T2. So I'm dividing this equation. We'll get R1 upon R2, R0, R0 cancel. 1 plus 27 alpha upon plus 1 plus T2 alpha. What is R1? Is it 1? R2 is 2? Correct? Hello? Hello? Yes, Yes sir. sir. Yes Yes, sir. sir. Now, Yes. now if I cross multiply, 1 plus T2 alpha is 2 plus 54 alpha. Koi shak? Yes, sir. Yes sir. Yes, T2 sir. alpha is 2 plus 54 alpha minus 1. Therefore, T2 alpha is 1 plus 54 alpha. Now I'm dividing throughout by alpha. So T2 will be 1 upon alpha plus 54 alpha upon alpha. Alpha alpha cancel. Tell me what is alpha value? 0.00. How many 0? 20? Yes, sir. 00125. Yes, sir. 125 plus 54. Please copy till this. फिर इसको मैं simplify करता हूँ.
Yes, completed till this? Yes, sir. Now see 1 2 3 4 5, तो ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या? Yes. मालूम है ना सबको? 1 upon Yes, sir. 0.1 you can write 10 upon 1, 0.01 तो ऊपर 100, ऐसा मालूम है ना? Yes, So sir. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 zeros plus 54. 25 into 5, is it 125? हाँ, and 25 into 400, आगे का 3 0. 5 8s are 40, 800. So T2 is 854 डिग्री सेल्सियस. है क्या आंसर देखो? in Kelvin. हाँ, तो इसको 273 ऐड करूंगा तो केल्विन होएगा Yes, sir. 1127. हाँ सर 1127. वेरी इंपॉर्टेंट सम बिकॉज वी विल डायरेक्टली राइट इन केल्विन. स्टार्ट में अल्फा सेल्सियस है, तो जो आप सॉल्व करोगे वो केल्विन रॉन्ग आएगा. सो कन्वर्ट ऑल इन सेल्सियस, एट द एंड यू कन्वर्ट इनटू केल्विन. यस अवन, क्लियर? All the Sir. girls? Yeah, okay. Please solve. Very important sum because of our chance of silly mistake. Completed full? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next sum. If the resistance of conductor is 6 ohm, the temperature, if the resistance of conductor is 6 ohm at 100 degrees Celsius. So resistance is 6 ohm at 100 degrees Celsius. Then its resistance at 100 degree पे है. Its resistance we want at 0 degrees Celsius. Resistance at 0 we want. If alpha is 1.75 into 10 raised to minus 3 per degree Celsius. What is formula for resistance at higher temperature? R0 1 plus alpha delta T. Now see, alpha is in Celsius, this is also in Celsius, no need to convert. So 6 equals to R0 1 plus 1.75 into 10 raised to minus 3 delta T is 100. So 6 equals to R naught 1 plus 1.75 into 10 raised to minus 1. Any doubt in calculation? Hello, any doubt in calculation? No, sir. No, sir. So if I multiply with 10 raised to minus 1,
That means I will divide by 10, na? So it will become 0.175. Is it correct? Yes. So R0 will be 6 upon 1.175. 6 upon 1.175. अभी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो. No need to solve. Can it be denominator 1 से ज्यादा है ना? Yes, sir. So answer less than 6 होगा ना थोड़ा? Yes, sir. Yes, So sir. can it be 6.2? Not possible. No. No, sir. So chance क्या है इसका? 5.10 ना? 5.10. Yes. Yes, sir. अभी गलती से उधर सब ए लिखा है. तो फर्स्ट वाला ए इज करेक्ट, रेस्ट ऑल बी सी डी आर इनकरेक्ट. Done 15th? Yes, sir. Yes, sir. 16th. For making electric heater, we should use which wire? Electric heater. Copper wire तो नहीं use करते हैं ना? Nichrome. Nichrome wire, yes. Nichrome wire we use. क्योंकि उसमें resistance बहुत high रहता है. Sir. Heating effect fast होता है Nichrome wire. 17. Certain substance lose their electric resistance at very low temperature. क्या मतलब है lose electric resistance? Lose electric resistance मतलब क्या? Lose electric resistance मतलब becomes conductor, no? हेलो? Yes, sir. हाँ, लेकिन क्या बोला एट वेरी लो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर. सुपर कंडक्टर at minus 42 degrees Celsius, their resistance becomes 0. Their resistance is 0. इसका मतलब अपने को बैटरी का भी जरूरत नहीं, अपने आप करंट आएगा ना. हेलो 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 Sir. तो जब ये -42 पे आएगा, जनरली वो मरकुरी का बना रहता है, लेकिन इतना कम टेम्परेचर पे हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते ज्यादा सब्सटेंस. तो दे आर डूइंग रिसर्च कि और क्या चीज को मिक्स करके -42 से थोड़ा कम टेम्परेचर पे लेकर आ सकते हैं, सो दैट नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने आप करंट फ्लो होएगा. आपको पता है वैक्सीन आने वाला है कोरोना का. Yes, sir. का एक कंपनी बना रहा है, वो बोल रहा है -17 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करना पड़ेगा. तो इट इज नॉट इजी टू स्टोर एट -17 ना. Yes, sir. Yes, sir. मतलब मुझे देखो ये फ्रीजिंग मिक्सचर लगेगा ना इसके लिए -20 हाँ. वाला,
फ्रीजिंग Yes, sir. मिक्सचर मतलब मुझे बार बार कुल्फी वाले के पास जाना पड़ेगा ना, उसके पास फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। आपने मटका कुल्फी खाया है? हाँ सर। तो उसका अंदर देखो वो ना सॉल्ट और आइस रखता है और उसका अंदर से Yes. कुल्फी का मोल्ड रहता है। तो मतलब अपने को बहुत कुल्फी वाला पकड़ना पड़ेगा टू स्टोर दिस। तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो एक लॉजिस्टिक कंपनी जिसका नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक, उसके पास ऐसा सिस्टम अवेलेबल है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं स्टोर करूंगा बट आई विल चार्ज। हैव यू हर्ड अबाउट शेयर्स? शेयर होता है कंपनी का। Yes, sir. तो Yes. इसका शेयर रातों रात बढ़ गया 20%, क्योंकि इसको अभी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। उसके पास टेक्निक है टू स्टोर लेस, नाम ही है स्नोमैन, मतलब ठंडा मैन है ना, ये स्नो लॉजिस्टिक है उसके पास। Yes, sir. So this is called superconductor which at -42 has zero resistance. सुपरमैन बन गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ऊपर से भाग सकता है ना वो। Got it? Answer of this? Yes, sir. Yes, sir. 18. Value of internal resistance of ideal cell is what? Zero ना? Ideal cell R is zero. Correct no? हेलो हेलो Yes. हेलो, बाउंसर गया क्या? Yes, sir. बाउंसर गया? आइडियल रजिस्टर, आइडियल सेल का रेजिस्टेंस जीरो होता है ना इंटरनल। आप लोग आइडियल है क्या रियल? रियल है, Real. रियल है, Real. Real है. रियल। आइडियल मतलब वो कभी भी मेरा बात सुनेगा। रियल मतलब प्रैक्टिकल रहता है थोड़ा। लॉकडाउन है, कोरोना का लॉकडाउन, कर्फ्यू, मैंने बोला सब स्टूडेंट आ जाना मुलुंड स्टेशन पे, सबको समोसा खिलाऊंगा, कोई आएगा क्या? बोले सर क्या रियल बात करो ना। नहीं. नहीं सर. तो मतलब आप लोग रियल है। तो अपना ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जब भी आइडियल अगर है तो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, आइडियल है तो मतलब ये कुछ भी वोल्टेज नहीं खाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। Yes, sir. आइडियली जीरो। अंडरस्टूड? आइडियल जीरो। Yes, sir. ओके 19. In a circuit containing two unequal resistance connected in parallel. Unequal मतलब सेम और डिफरेंट? Different. Parallel means what is same? Voltage is same na? Voltage. Voltage same. So in parallel Voltage. whether resistance is same or different, voltage तो same ही रहने वाला है। Voltage is same. What is current का formula? Voltage upon resistance na? Yes, sir. Yes, sir. So can I say if voltage is constant तो I और R उल्टा है ना, inverse? That's Hello? true, Vishnu. इनवर्स है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि No. इनवर्स है ना। सेम कभी होएगा जब भी दोनों रेजिस्टेंस है। सो करंट इज सेम, नो गारंटी, क्योंकि अनइक्वल है ये। लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू लार्ज रेजिस्टेंस, नो। लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू स्मॉल रेजिस्टेंस, करेक्ट? हेलो, Yes, sir. तो सी आंसर राइट है ना, वोल्टेज अक्रॉस बोथ इज सेम। फॉलोड? Yes, sir. या Yes. राइट, यस राइट। मस्त चैप्टर है यार, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है एज कंपेयर टू काइनेमेटिक्स और law of motion. This Sunday test will be on MCQ of current electricity. Okay. Kathan, I got your message, but your paper is not corrected. I am not getting time. Today I will take out time and prepare, make the solution, send the solution first so that you can also check. Yes, I am. Done? Yes. अभी इस पे ना एक थोड़ा सा नोट लिखते हैं। This so we got answer. How to get current का formula. This is current I. ये दो पार्ट में डिवाइड होएगा, I1 I2। मुझे I1 I2 का फॉर्मूला चाहिए in terms of R1 R2. As a note you write, huh? Sometimes they can ask this. Current I1 I2 I want.
voltage is same. Can I say V1 is same as V2? Yes, sir. So I1 R1 is I2 R2. Therefore I1 R1 Yes, sir. upon I2 is R2. But I1 plus I2 equals to I. So I1 plus I1 R1 upon क्या कर दिया मैंने I2 इधर R2 ले लो, ठीक है. So I1 R1 upon R2 is equals to I2 is I1 common 1 plus R1 by R2 is I. So I1 will be R2. Hello? Yes, sir. Yes, sir. R2 plus R1 upon R2 equals to I. So can I say I1 is by cross multiplying R2 upon R1 plus R2 of total current I. So whenever you want total current is given, R1, R2 given, I want I1, I will remember this formula. I1 is ऊपर देखो R1 नहीं है R2 है, वैसा I2 आएगा R1 upon R1 plus R2 of I. Please copy till this. Frequently they ask such type of question. Full kinematics, please revise as fast as you can. Again, if you complete, give me hint to move ahead. Done, sir. Done? Okay. Everybody has done? Yes, sir. Yes, sir. Good. Next one, 20 wala. A 50 volt battery is connected across 10 ohm resistance. 50 volt battery is connected across 10 ohm resistance. Current through the resistor is 0.5 ampere. What is internal resistance of the cell? Diagram followed. Diagram everybody has followed. Yes. Battery is giving the current or taking the current? Giving. Giving. Supplying. That means E is wire IR का voltage plus I into small r का voltage. Yes, sir. Am I? Okay. So can I say E is 50, I is 4.5 into capital R 10 plus 4.5 into R. So 50 is 45 plus 4.5 R. So 50 minus 45 is 4.5 R. So 5 equals to 4.5 R. R is 5 upon 4.5. Therefore R equals to 50 upon 4.45 decimal nikala. 5 into 10, 5 into 9. 9 into 1 is 9. 1111 will be recurring. Check 1.11 के आसपास, yeah, exactly that is given. C answer. This also everybody has followed. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है.
Done, sir. Okay. 21. Internal resistance of cell of 2 volt is 0.1 ohm. It is connected to resistance of 3.9 ohm. बहुत simple है. What is voltage across cell? Voltage across cell. See, voltage across cell मतलब ये वायर का across है, बाहर वाला. Hello, everybody has understood diagram part? Yes, sir. See, if I get current I, then can I say V is IR? Yes, sir. Yes. So total current is total voltage, matlab EMF, and total resistance which are in series. So E is 2, 0.1 plus 3.9 is 2 upon 4 is 1 upon 2. That means current is 0.5 ampere. Now voltage across the cell, matlab across resistance is a year. I is 0.5, R is 3.9. 0.5 का मतलब actually half होता है. Half into or directly multiply. 1.95. Yes, 1.95 volt. 1.95 volt. So you can also write this way. E is V plus IR. तो भी वही आएगा. E is nothing but 2. I is 0.5 into this R. So 2 minus 0.05 वही आएगा. Done, sir. Okay. Sum number 22. The current flowing through a lamp. This is a lamp. Current flowing through a lamp of 50 watt power and 250 volt supply is how much? What is formula for power? VI. Okay, VI. VI or I square R Is or Yes, P sir. square V by square R. by R. Same formula. So which I should select? ये वाला ना? So since power is VI, so I will become P upon V. P मतलब 50 upon 250. 50 into 5. So 1 upon 5 means 0.2 ampere. Option A. Done? Yes, sir. Very beautiful sum now. 23rd. Current flowing in conductor changes by 1%. Current changes by 1%. Then power will change by what? Change by dash percent.
Hello. See, power has three formula. One is VI, दूसरा V square by R, and third is I square R. अभी कौन सा यूज करूं बता सकते हैं क्या? I square. Yes. I square R. Why? You are correct, but why? Current is in that formula and resistance. कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता है करंट कम ज्यादा करने से ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट होगा ना. सो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला देन? बाय दिस इज I square R, but R for any conductor is constant है ना. So can I say Yes, sir. power is proportional to R square? अभी आपको मालूम है पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग परसेंटेज में. So percentage change in P. What is power of I? 2 times percentage change in I. In first chapter we have done. Got it? Always power we multiply to get percentage change. Hello? Yes, sir. So 2 into 1 will become 2%. फिर से बताओ. नहीं सर समझ गया. हाँ, पहले ये समझा सिलेक्शन. इसका क्यों सिलेक्शन किया? बिकॉज R इज कांस्टेंट, तो खाली P और I का रिलेशन मिलेगा. देन पावर बिकम्स मल्टीप्लायर. नाउ हेलो. हाँ नहीं नहीं नहीं, खाली 11 का. हाँ 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 हाँ. Okay. Can I clear now? Yes, sir. 24th भी सही समय. A 100-watt 200-volt bulb is connected to 160-volt power supply. The power consumption would be how much? मस्त समय. इसका क्या मतलब रहता है हितार्थ, पता है आपको? किसका? ये ऐसा लिखा है A 100-watt 200-volt बल्ब. इसका मतलब क्या? इसको रेटिंग बोलते हैं हम लोग. क्या बोलते हैं इसको? उसका रेटिंग, पावर रेटिंग. हाँ, मतलब क्या है कि जब 200 वोल्ट देंगे ना आप तभी इतना पावर लेगा. तब 100 वाट का पावर इट विल प्रोड्यूस. लेकिन आपने तो कम दिया तो इतना पावर नहीं लेगा. बराबर? हेलो. यस सर. देखो कभी कभी देखो हम बल्ब खरीदते हैं ना तो उधर लिखा रहता है ना सर रेटिंग ऊपर. रेटिंग मतलब ये मैक्सिमम बोलेगा, मैक्सिमम. इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप. बराबर? Yes, sir. अभी बल्ब को मैं करंट दूं, वोल्टेज दूं, पावर दूं, कुछ भी, लेकिन अंदर वो रेजिस्टेंस सेम है क्या? नहीं. बल्ब का रेजिस्टेंस तो सेम होगा क्या? नहीं. Yes, sir. ओके. सो पावर का क्या फॉर्मूला है बोलो अभी? मुझे V और R में चाहिए. V square by V V square square by R. R. V square by R. कांस्टेंट कौन है इसमें? R. 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 वेरी गुड. सो P1 अपॉन P2 क्या मिलेगा? V1 अपॉन V2 स्क्वायर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट पावर 100, सेकंड पावर चाहिए. फर्स्ट वोल्टेज 200, सेकंड वोल्टेज इज 160. करेक्ट? नो. Yes, sir. 0 0 cancel. 4 4 is 16, 4 5 is 20. So 100 upon P2, 5 square 25, 4 square is 16.
25 into 400. So P2 is 16 4s are 64 watt. Got it? Yes, sir. Option A. And then you are following all the sums? Yes, sir. Okay, after the lecture, wait for 2 minutes. Okay, sir. Sir, Yes, beta. sir, what if we give the bulb more power than it can handle? No, तो ये नहीं, मोर पावर होगा तो ना वो ये रेजिस्टेंस ना मेल्ट हो जाएगा. Okay. इससे ज्यादा इट कांट हैंडल. ये रेटिंग मतलब इसका कैपेसिटी उतना ही है. देखो मेरा कैपेसिटी है बाई चांस 5 चपाती खाने का, तो मैं 4 खाऊंगा तो भी चलेगा, 3 खाया तो भी चलेगा, लेकिन 6 खाया तो जुलाब होएगा ना. हाँ हाँ समझे. तो वैसा है वो. और सर अगर कम पावर दिया तो इट विल वर्क? हाँ वर्क होएगा, खाली डिम होएगा, डिम. हाँ. इट विल वर्क बट पूरा ब्राइटनेस नहीं रहेगा. हाँ सर, अंडरस्टूड. मतलब वो एग्जांपल ना, 4 रोटी में आपका पेट भरता है, 2-3 खाना चालू कर देंगे तो बॉडी पतला हो जाएगा ना. तो कोई भी बोले अरे खाना नहीं खा रहा लगता है, यस मतलब सर. ग्लो कम हो जाएगा. डन. यस सर, डन. ओके, एवरीबॉडी इज डन. Yes, sir. Yes, sir. 25th, sorry. A uniform metallic wire has constant voltage. A metallic wire has constant voltage. समझ के करो, टेंशन मत लो, कुछ नहीं है. Across it, heat developed for given time interval is doubled. Heat is doubled बोल रहे हो लोग. Voltage is constant, heat is doubled. Time interval is doubled. Internal नहीं, interval. Heat developed for given time is doubled. Then what will be? Okay. किसको किसको हीट का फॉर्मूला मालूम है? I square RT. I square. ओके, आई स्क्वायर आरती सबको मालूम है. दूसरा V VIT, square by RT. V स्क्वायर बाय RT. वेरी गुड. अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या बोल रहे हो लोग? Voltage. V कांस्टेंट है ना, बोला ना, V कांस्टेंट है ना. Yes, sir. यस सर, यस. टाइम भी कांस्टेंट बोला ना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम. यस. तो H और R का क्या रिलेशन मिला आपको? Was 0%. इनवर्स. तो H1 अपॉन H2 विल बिकम R2 बाय R1 और नॉट. यस सर. H इज डबल ना, तो हीट डबल किया वो लोग ने. तो कैन आई से R2 इज हाफ ऑफ R1, है ना? यस सर. अभी R2 हाफ किया, इसका मतलब बोथ लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर को हाफ किया. क्या बोथ लेंथ एंड रेडियस को डबल किया? क्या ओनली रेडियस को डबल किया? क्या ओनली लेंथ को डबल किया? दिस इज माय क्वेश्चन. चेक कर लेते हैं. फर्स्ट कॉपी टिल दिस. Resistance is becoming half of R1. Done, sir. डन. चलो अभी रेजिस्टेंस हाफ करना है, तो उसका फॉर्मूला रो एल बाई ए है ना. Yes, sir. उसका ही मतलब रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर ना. क्लियर? यस सर. अभी ये कांस्टेंट है और ये पाई कांस्टेंट है ना. यस. सो इफ आई बोथ लेंथ एंड रेडियस को हाफ किया तो क्या होएगा? देखो, इफ लेंथ इज हाफ,
radius is also half, so this will become half into 1 upon 1 upon 4, तो डबल हो जाएगा ना, है ना आंसर? हाँ सर। Yes, sir. मतलब ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि हम लोग को हाफ चाहिए, है ना? अगेन हाँ सेकंड केस, रो और पाई कांस्टेंट है, लेंथ को बोथ रेडियस एंड डबल, बोथ आर डबल, तो लेंथ को डबल किया, रेडियस तो डिनोमिनेटर में, उसको भी डबल किया, मतलब ये 1 by नेट 2 क्या हो जाएगा? 2/4, 1/2 हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। सो विच इज करेक्ट वन? Option B. बी। सुपर, यस, वेरी गुड सन। 26 red black, what will be value of resistance अगर red black है तो? red stands for which digit? 2. 2. 2. red stands for 2 and black stands for 0. 0. 0. So and tolerance कुछ color ही नहीं है ना, no color, so what will be tolerance? 20% ना? 20%. Tolerance is plus or minus 20%. So can you tell value of resistance will be 22 into 10 raised to 0 ohms plus or minus 20%? Correct na? Yes Yes, sir. sir. 10 raised to 0 means 1 na? Yes, sir. So it is Yes. 22 ohm plus or minus 20%. What is Yes sir. अभी किसका 20% होता है? ये इसका, तो इसका 20% कितना होएगा? 22 का 20%, 4.4 और नॉट, है ना? 44 Yes sir. upon 10, Yes. 4.4 है क्या ऐसा आंसर अपने पास? Yes, sir. कौन सा है? बी है ना? नहीं समझा? समझा सर। समझा sir. ओके, थैंक यू। Please practice all sums once again. So today we stop here. I'm not doing many sums. It should not become burden to you. Please practice all the sums once again. They are not difficult, but yes, tricky. Done, sir. Done? Okay. So that's all for today. We'll again meet on Friday. Homework